স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরায়, থাকে শুধু লংতরায়। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়, চাই শুধু লংতরায়। লংতরায় গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়। Kelongkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotno koktuma kasha kaham sanani sheb mangkha. Bo Akshaya Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau te offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on my thok te chin sasa ha paro hawen nai len. Akshaya Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshaya Tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai narong mane 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty Take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te issue di mane mini purchase. Angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi Visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur Rock 7 Mary Sikang Hambai আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Pram Lychee Drink. Refresh your feelings. Kelongkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rejakha
22 April ni simi 3 May jora Swarnakomal Jewelers haste ni joto lokorongni bagui kaisa koptoma kaham tubui phaikya abong kha Swarnakomal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsakni manik tubui phaikya offer o tongnai 25% off rangsakni making charges so te diamond o tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagui joto lokorongno phaina bagai kobok jao hambai Choco Bean, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় Refresh your feelings. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি Choco Bean, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন
This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. India has shown its mighty strength to the world through Operation Sindoor. It was a demonstration of India's strong will against terrorism to honor these women who lost their husband in Pahalgam terror attack. India's strike is named as Operation Sindoor. Operation Sindoor has destroyed several militant bases in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. More than 100 militants have been killed in this. The list includes militant leaders like Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, Mudassir Ahmed. BSF Sub-Inspector Mohammad Imtiaz martyred during intense cross-border firing by Pakistan at Arespura sector of Jammu on Saturday. He is a resident of Chapra, Bihar. Prime Minister Narendra Modi chairs a high-level security meeting bringing together with top ministers and military leaders to review national security and strategic operations. Defense Minister Rajnath Singh, despite ceasefire agreement, Pakistan launches drone attack. No nation support terrorism and extremists. Chief Minister Dr. Manik Shah strongly condemns against the extreme behavior of Pakistan. CPIM General Secretary Mariam Alexander Baby questioned US role in India-Pakistan ceasefire, reaffirms bilateral path to peace, especially questioning the involvement of a third party, the President of the United States, in what he termed a bilateral issue. Bringing to you the news of the day. India has shown its mighty strength to the world through Operation Sindoor. It was a demonstration of India's strong will against terrorism to honor these women who lost their husband in Pahalgam terror attack. India's strike is named as Operation Sindoor. Defense Minister Rajnath Singh said this while inaugurating a new BrahMos missile production unit in Lucknow, Uttar Pradesh on Sunday. Since its maiden successful launch conducted on the 12th of June 2001, after its creation in February 1998, BrahMos has undergone a world-beating record of more than 100 test firings to date, from different platforms in divergent scenarios, charting the highest rate of success. The BrahMos, known as the world's fastest supersonic cruise missile, boasts a range of 290 to 450 km and can travel at 3 times the speed of sound. Capable of being launched from land, sea or air, it offers pinpoint accuracy and high lethality, operating on a fire-and-forget mechanism. India has such fastest supersonic cruise missile. India launched BrahMos Missile Production Unit Factory virtually in Lucknow, Uttar Pradesh on Sunday to increase the production of BrahMos missile. Defense Minister Rajnath Singh inaugurated a new BrahMos Missile Production Unit in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, while speaking, said about the world's fastest supersonic cruise missile. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के अपने सभी बहादुर जवानों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। 2018 में जब उत्तर प्रदेश ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया था,
तब केंद्रीय बजट में 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा हुई थी, लेकिन ये कहां बनेंगी, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने इसी लखनऊ में की थी कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए हम दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इसके लिए 6 नोड तय किए गए। राजधानी लखनऊ में, कानपुर में, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट में। ये 6 जो नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए स्थापित हुए, 2019 में केंद्र में फिर पुनः सरकार बनने के उपरांत रक्षा मंत्री के रूप में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए, तो पहली बार लखनऊ में 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होता है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने अब घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। Likewise, Defence Minister Rajnath Singh, while addressing his speech, said that India has shown its mighty strength to the world through Operation Sindoor to honor these women who lost their husband in Pahalgam attack. साथियों, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इसका शिलान्यास किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस दौरान मैंने यह इच्छा जाहिर की थी कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी भावनाओं का सम्मान रखा और महज 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं, उसे देखते हुए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी, तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। साथियों, हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विजन को लेकर आगे बढ़ी थी, तो उस समय हमारे सामने अनेक बड़े लक्ष्य थे। उन तमाम लक्ष्यों में से हमारा एक उद्देश्य यह भी था कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश के प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप करें।
यूपी डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ सहित कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़ से होकर गुजरता है और ये सभी नोड्स आने वाले समय में विकास के नए केंद्र बनकर उभरेंगे। साथियों, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि एक समय कानपुर और आसपास का क्षेत्र प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था। आर्थिक रूप से यह क्षेत्र बहुत ही समृद्ध था। इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। लेकिन आजादी के बाद अनेक कारणों से आर्थिक प्रगति की राह में यह क्षेत्र पिछड़ता गया और कहीं पीछे छूट गया। मैं उन कारणों में तो नहीं जाना चाहूंगा, पर कहना यह चाहता हूं कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के बाद यह क्षेत्र फिर से एक बार अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ चला है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानपुर विकास की उन ऊंचाइयों को छुएगा जो दुनिया के विकसित क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय होगा। कल को वेस्ट में कोई क्षेत्र जब बहुत अधिक प्रगति करेगा तो उसे कानपुर ऑफ द वेस्ट कहा जाएगा। इसी प्रकार डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नोड्स को डेवलप करने के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। मुझे यह भी बतलाया गया है कि अभी उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यूएवी, ड्रोन्स, एमिनिशंस, कंपोजिट एंड क्रिटिकल मटेरियल्स, स्मॉल आर्म्स, टेक्सटाइल तथा पैरासूट आदि में मेजर इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस डिफेंस कॉरिडोर में हमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही बड़ी अहम भागीदारी दिखाई दे रही है। साथियों, जब मैं प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की बात कर रहा हूं तो मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लखनऊ में ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट्स की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा 7 एडिशनल क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स की भी नींव इस समय रखी जा रही है। यह निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की गति को और तेज करेगा। मैं इसके लिए श्री सचिन अग्रवाल को भी बधाई देना चाहता हूं। हमारा सपना है कि उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज जो फैसिलिटी सेंटर शुरू हो रहा है, यह भारत की शक्ति को और मजबूत करने में सहायक होगी। साथियों, यह केवल एक फैक्ट्री का उद्घाटन भर नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक नए सिरे से श्री गणेश हो चुका है। इस डिफेंस कॉरिडोर में अब तक कुल 180 के लगभग एमओयूज साइन किए जा चुके हैं।
जिसमें जिसमें 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी तक इस कॉरिडोर में 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया भी जा चुका है। साथियों, टेक्नोलॉजी डे के दिन इस हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फैसिलिटी को इनागुरेट करना अपने आप में एक लैंडमार्क डे है। Might of Indian force will attack in any parts of the world if any terrorist group attack India. It was a demonstration of India's strong will against terrorism, says Rajnath Singh while speaking about Operation Sindoor. Transform the far-sighted mind-to-market strategy into a reality. Bureau Report, Chini Khorang. Operation Sindoor has destroyed several militant bases in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. More than 100 militants have been killed in this. The list includes militant leaders like Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, Mudassir Ahmed. This claim was made by the Indian Army, Navy and the Indian Air Force at a press conference on Sunday. Operation Sindoor has destroyed several militant bases in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. More than 100 militants have been killed, the Indian Army said in a press conference on Sunday. It is said that India has targeted the military bases with precision. In a press conference, Indian Army DGMO Lieutenant General Rajiv Ghai said that more than 100 militants were killed in the military operations conducted in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. He said that India needed to give an answer in response to the Pahalgam massacre. The Indian Army has said that the militants who hijacked the Kandahar plane and the plotters of the Pulwama attack are among the slain militants. The list includes Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf and Mudassir Ahmed. We will begin with opening statements by the three senior officers to my right here who have been directly overseeing operations during Operation Sindoor. We have Lieutenant General Rajiv Ghai, Director General Military Operations, who will cover the aspects related to land domain. Air Marshal A.K. Bharti, to his right, Director General Air Operations, will provide insights on the air domain. And to my right is Vice Admiral A.N. Pramod, Director General Naval Operations, who will cover aspects on maritime domain. Following their briefings, we will move on to the question-answer session. I now request the DGMO to commence the opening brief. Thank you, Sandeep. A very good evening to all of you, ladies and gentlemen. You are all by now familiar with the brutality and the dastardly manner in which 26 innocent lives were prematurely terminated at Pahalgam on the 22nd of April. When you combine those horrific scenes and the pain of the families that the nation witnessed with numerous other recent terrorist strikes on our armed forces and defenseless civilians, we knew that the time had arrived to make yet another compelling statement of our resolve as a nation. Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us.
There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed targeted what we set out to. The precise images of these engagements on that fateful and historical night have already been showcased during the first press statement on the 7th of May that was helmed by our Foreign Secretary. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed, that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. The Indian Air Force obviously had their assets up in the sky, and I will here request Air Marshal Bharti, the Director General of Air Operations, to detail for you the methodology that the men in blue adopted to successfully manifest this mission. It indeed is a difficult time that we have to come here like this and brief you. We could have done without this, but we had no choice. As the DGMO has detailed, the event was precipitated by the dastardly act at Pahalgaon. The sequence of events have already been detailed. We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted air strikes. Could I have the second slide, please?
Yeah, change please. Okay. This is what the terror infra at Muridke looks like. If you see, north is as indicated, and to the right is east, where the international boundary lies. Could we have the next slide, please? Orientating. Just go back to one slide. Okay. Please have a look at this red building. The series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapons on early morning 7th. Next, please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide, please. Third weapon, third impact. Continue. And fourth weapon, fourth impact. So through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the terrain infrastructure. Can you hear me? All right. Okay, I'll come closer to the mic. Now we go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. Next slide, please. Okay, just wait. So the effect, if you see, the impact point, if I can point out, this is the impact point. The ammunition has gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And the red building, after that, there was this double-story building. It has been completely decimated by precision targeting. Next, please. The target system, which was in the north, a series of buildings. I will show you how it looked. Next. Completely destroyed by our precision targeting. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon. And orientation in relation to this red canopy, you can see here. Next, please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. Next. All right. So that was what we did on the 7th. Our objective was to address these two terrorist camps, and that we did with precision. And thereafter, we maintained a robust air defense posture, because remember, our objective was to target the terrorists and terrorist infrastructure, not any other infrastructure, not the
Pakistani military, not the Pakistani any other infrastructure. So that is what we have maintained on the 7th of May. However, what we saw in the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. The Indian Army has said that the attack was aimed at causing major damage to militant bases. No innocent civilians were targeted. However, Pakistan have used drones to the civilians in India. Bureau Report, Chini Khorang. BSF Sub-Inspector Mohammad Imtiaz martyred during intense cross-border firing by Pakistan at Aryaspura sector of Jammu on Saturday. He is a resident of Chapra, Bihar. मान गया तो इधर आइयो ये को इधर हाँ Operation Sindoor was launched on the last 7th of May. 15 days after the Pahalgam terror attack, India launched Operation Sindoor to strike back at terror camps in Pakistan. On May 7, India struck 9 terrorist camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. However, after the ceasefire agreement between both countries, Pakistan once again violated the ceasefire and attacked on Indian civilians with drones and missiles, causing many casualties in different parts of the country. BSF Brave Heart Sub-Inspector Mohammad Imtiaz was martyred on 10th May during intense cross-border firing in the Aryaspura sector of Jammu. He laid down his life in the line of duty while defending the nation. Salute to the bravery and sacrifice of the brave BSF Sub-Inspector Mohammad Imtiaz Sahib, a resident of Chapra, Bihar. Tributes are pouring in for the fallen hero whose courage and sacrifice will be remembered with pride and gratitude.
अभी तो हमको सुबह सुबह सूचना मिली है, जैसे मिली सूचना में यहाँ आ गया। व्यवहार के बारे में मैं क्या बताऊं, हम लोग साथ पढ़े हैं और वो मालिक के भाई भी साथ ही थे और बहुत अच्छे लोग थे, मिलनसार थे। कभी मतलब कि हम लोगों के क्लास में तू में नहीं हुआ और अच्छे लोग थे। मतलब कि उनके जाने से मतलब कि बहुत ही जवार दुखी है, देश तो दुखी है ही। इतना कुशल आदमी हम लोग के बीच से चला गया। लास्ट टाइम सोमवार को 3 बजे हुआ था। क्या बोले थे? कि स्थिति बहुत गंभीर है, कि फोन रखिए। कितना देर बात हुआ होगा आपका? माने 3-4 पर बात हुआ क्या बोल रहे थे? कि माने कंपनी का खबर है, तो खबर बहुत स्थिति गंभीर है, फोन जल्दी काटो जुन भाई, जल्दी फोन काटो। हाँ, गांव कब आए थे लास्ट में? बाबू माने 14-15 दिन हुआ गया हुआ उनका। 14-15 दिन। हाँ, हाँ, क्या क्या बात करते थे आपको? कैसे इंसान? बहुत बढ़िया आदमी थे। क्या क्या बताते थे? बॉर्डर की बातें? बॉर्डर के बात तो बहुत बताते थे कि माने हम बॉर्डर पर रहते हैं, कि बहुत माने चीज है सब वहाँ है, कि देखिए कि हमारा छुट्टी पूरा हो गया है कि हम निकल जाएंगे। फिर घर आने की बात कर रहे हैं? ना ना, यहाँ से जाने के लिए कि मतलब छुट्टी पूरा हो गया है, छुट्टी पूरा हो गया है कि हम निकल जाएंगे, कि रुकेंगे नहीं, कि थोड़ा मेरा परिवार में ध्यान रखिएगा। हमको बात नहीं हुआ था कोई। नहीं, गांव में आए थे? हाँ, गांव में हुआ शुरू में, अप्रैल में हमसे बात हुआ था। मेरे दरवाजे पर 2 घंटा बैठे थे, समझे। यही सब बात चलता था, माने ज्यादा बतियाते थे बॉर्डर वाला बात। आप उनके मित्र हैं? बहुत शुरू से लेकर, मैंने प्रथम क्लास से लेकर मैट्रिक तक हम लोग साथ में पढ़े हैं। क्या क्या बचपन में कैसे थे वो? बहुत मिलनसार, माने हम लोग साथी थे हम लोग। हाँ, मिलजुल कर हम लोग पढ़ते थे। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं उनका उचित मुआवजा मिले। Brave Muhammad Imtiaz last tribute and condolence was held in BSF camp of Bihar. Director General of BSF and all other officers and forces were present at the condolence service. Bureau Report, Chini Khorang. Prime Minister Narendra Modi chairs a high-level security meeting bringing together with top ministers and military leaders to review national security and strategic operations. Defense Minister Rajnath Singh, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval and other dignitaries were present at the meeting. Prime Minister Narendra Modi chaired a high-level meeting at his official residence in New Delhi today on Sunday, bringing together top ministers and military leaderships to review national security and strategic operations.
present at the meeting were Defence Minister Rajnath Singh, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, and the Chief of the Indian Army, Navy and the Air Force. The meeting comes amid heightened strategic developments and is believed to have focused on ongoing national security measures and operational readiness, with a particular emphasis on Operation Sindoor. The deliberations underline the government's proactive approach to safeguarding India's sovereignty and interest in a rapidly evolving global and regional security landscape. However, drone attacks from Pakistan end on Sunday morning. Jammu and Punjab current situation has cooled down as of now. Citizens were seen coming out like normal days. जी सर आज सुबह क्या माहौल है? अभी तो शांति है सर। लोग घर से निकल रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं दुकानें खोले या नहीं खोले। भाई अगले आदेश तक इंतजार करें, अगला आदेश क्या आता है, गाइडलाइन सरकार की गाइडलाइन की पालना करावें। However, the nation does not trust on Pakistan. They may be attacking India during night. Bureau Report, Chini Khorang. Despite ceasefire agreement, Pakistan launches drone attack. No nation support terrorism and extremists. Chief Minister Dr. Manik Shah strongly condemns against the extreme behavior of Pakistan. Pakistan has finally decided to bow down before India after consecutive attacks. Pakistan chose peace over violence in the end. India and Pakistan have agreed to a ceasefire on land, sea and air effective from 5 p.m. on Saturday. But in less than 3 hours of the announcement of ceasefire, drones were spotted in Srinagar, Udhampur and other parts of the Jammu region. Blackouts were enforced in several areas across Jammu and Kashmir, Punjab and Rajasthan as a precaution amid what marks another Pakistani drone intrusion in a series of nighttime provocation. Speaking during the briefing, Foreign Secretary Bikram Misri said it is a Pakistani action that have constituted provocation and escalations. Moreover, free hand was given to Indian Army to neutralize Pakistan. Likewise, Chief Minister Dr. Manik Shah strongly condemned Pakistan terrorism. Despite ceasefire agreement, Pakistan launched drone attack. No nation support terrorism and extremism. Chief Minister Dr. Manik Shah said this while speaking at the blood donation camp organized by Bandamalipur Sri Sri Ramthakur Seva Mandir on Sunday. Everywhere it happens. Depends upon circumstances, and internationally also we have to decide. So for time being, already declaration has been made for ceasefire, and I think against the terrorism or terrorist, our fight will remain intact. But can we believe really Pakistan, when even after ceasefire, yesterday we have seen they have continued sending drones and shells towards India. They have violated. I have also noticed, and ultimately they have withdrawn. And let's see in future what they do. The Chief Minister encouraged the blood donors on this day during the event. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. CPIM General Secretary Mariam Alexander Baby questioned US role in India-Pakistan ceasefire, reaffirms bilateral path to peace, especially questioning the involvement of a third party, the President of the United States, in what he termed a bilateral issue. India agreed to ceasefire with Pakistan with the interference of the US President before India could take full revenge over the Pahalgam terror attack. However, in less than 3 hours of the announcement of ceasefire, drones were spotted in Srinagar, Udhampur and other parts of the Jammu region. Blackouts were enforced in several areas across Jammu and Kashmir, Punjab and Rajasthan as a precaution amid what marks another Pakistani drone intrusion in a series of nighttime provocation. Speaking during the briefing, Foreign Secretary Bikram Misri said it is a Pakistani action that have constituted provocation and escalation. Moreover, free hand was given to Indian Army to neutralize Pakistan. As such, CPIM General Secretary Mariam Alexander Baby questions US role in India-Pakistan ceasefire, reaffirms bilateral path to peace. Specifically questioning the involvement of a third party, the President of the United States, in what he termed a bilateral issue.
He further urged the government to elaborate the incident to the citizen. You see, the position that my party, Communist Party of India Marxist, has been taking is that on bilateral problems, third-party intervention to negotiate or settle is uncalled for. Bilateral issues are to be bilaterally discussed and sorted out, not taking recourse to military solutions. This has been our time-tested approach. Government of India also used to maintain the position that internationalizing our domestic problems or our problem with our neighbors is unacceptable. We would deal with the problem with our neighbors in a mutually agreeable manner through negotiation. You see, de-escalation is taking place at different levels. So, Government of India will have to explain as to how the President of United States of America has made the announcement first. A day before US President made this announcement, we all followed the stand taken by the Vice President of United States of America that we don't want to meddle with these things. We want these issues to be settled between the countries. That was what US Vice President stated a day ahead. Then comes this statement from the President of USA. The President of USA is not behaving as the President of USA. He behaves as though he is the President of the world, which is unacceptable. Anyway, now it is for Government of India to explain as to how this kind of a situation evolved. I remember our Foreign Secretary has stated that it was the Director General of Military Operations of Pakistan who called the Director General of Military Operations India and communicated that they are willing for a ceasefire. This was accepted. This is how Government of India spokesperson, Foreign Secretary explained it. There is a discrepancy between his statement and the claim made by the President of United States of America. We expect Government of India would clarify as to how this confusion about the role of different countries in this ceasefire, that will be clarified, we hope. Along with CPIM, Rahul Gandhi wrote an important letter addressed to Prime Minister Narendra Modi demanding for special parliamentary session to discuss the Pahalgam terror attack, Operation Sindoor and the ceasefire announcement by US President Trump. Bureau Report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum.
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 8টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. India has shown its mighty strength to the world through Operation Sindhu. It was a demonstration of India's strong will against terrorism to honor these women who lost their husband in Pahalgam terror attack. India's strike is named as Operation Sindhu. Operation Sindoor has destroyed several militant bases in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. More than 100 militants have been killed in this. The list includes militant leaders like Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, Mudassir Ahmed. BSF Sub-Inspector Mohammad Imtiaz martyred during intense cross-border firing by Pakistan at Arespura sector of Jammu on Saturday. He is a resident of Chapra, Bihar. Prime Minister Narendra Modi chairs a high-level security meeting bringing together with top ministers and military leaders to review national security and strategic operations. Defense Minister Rajnath Singh, despite ceasefire agreement, Pakistan launches drone attack. No nation support terrorism and extremists. Chief Minister Dr. Manik Shah strongly condemns against the extreme behavior of Pakistan. CPIM General Secretary Mariam Alexander Baby questioned US role in India-Pakistan ceasefire, reaffirms bilateral path to peace, especially questioning the involvement of a third party, the President of the United States, in what he termed a bilateral issue. Bringing to you the news of the day. Choraibari police arrested a person named Abdul Salam, also known as Kutumia, on charges of uploading a video clip on social media criticizing BSF during the India-Pakistan war. A Muslim youth posted negative statement against border security forces in the social media, criticizing the BSF during the current war-like situation between India and Pakistan. As such, Choraibari police lodged an FIR against Kutumia on charges of spreading negative statement against the national security forces in between the current deadliest conflict between India and Pakistan. Police arrested Kutumia after an FIR was filed. একটা লিখিত অভিযোগ আছে যে আব্দুল সালাম, ডাক নাম কুটুমিয়া, বাবার নাম রুল আমিন, বাড়ি পূর্ব ফুলবাড়ি, ও
ও ফেসবুক অ্যাকাউন্টে মানে বিএসএফকে নিয়ে একটা আপত্তিকর পোস্ট শেয়ার করেছে। ওর বিরুদ্ধে আমরা একটা অভিযোগ পাই। তারপরে অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা ওর বিরুদ্ধে একটা কেস রেজিস্টার করি, যা চুরাইবাড়ি থানার কেস নাম্বার 2025 CRB 15, যার ধারা 196, 352, 353 BNS। তারপর আমরা কেস রেজিস্টার করার পর আব্দুল সালামকে অ্যারেস্ট করি। আজকে সকালে তাকে অ্যারেস্ট করি। অ্যারেস্ট করার পর আজকে তাকে আমরা কোর্টে চালান করি। ফেসবুকে শেয়ার করেছে, শেয়ার তো কতগুলো জিনিস আছে যেগুলো দেশ বিরোধী। এসব পোস্ট যদি কেউ শেয়ার করে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যথারীতি যেসব মানে পোস্টগুলা দেশ বিরোধী বা আমাদের সৈনিকের বিরোধী বা তাদের মনোবলকে দুর্বল করবে, এসব পোস্ট শেয়ার করা বা ওইসব পোস্টকে লাইক করা থেকে বিরত থাকাই ভালো। The state police urged the people not to spread such negative statement posted in social media. Bureau report, Chini Khorang. NCC police recovered the stolen items of Kunjaban quarter complex. Police arrested 3 thieves involved in this incident. NCC police presented them to the court asking 5 days of police remand. Theft incident cases has been increasing across the state. The youth are involving in drug abuse and many other toxic items, which is why every day a gang of thieves are attacking in all kinds of places, including houses, shops, temples, schools, and even government house. As such, on the last 9th of May, iPhone, iPad, and many other expensive items were stolen from the quarter house of Abhishek Chandra. Later, he filed an FIR to NCC police station. After the investigation, police arrested 3 thieves on Sunday. Their names are Akash Ravi Das, Dipankar Banik, and Sujit Chakrabarti. Several stolen items and money was also recovered from them. The recovered items were nearly about 3 lakh, said the UC of NCC police station. আমাদের কাছে একটা রিটার্ন কমপ্লেন আসে যে আমাদের কুঞ্জবন টাউনশিপ একটি কোয়ার্টারে চুরি হয়েছে এবং বাড়ির যে চুরির যে এই কোয়ার্টারের যে ওনার উনি দিল্লিতে ছিলেন এবং সেই সুযোগে চুরি হয়েছিল। সে অনুযায়ী আমরা একটা এফআইআর রেজিস্টার করি। মামলা তদন্ত দায়িত্ব দেওয়া এসে জয়নাল হোসেনকে এবং তদন্তের সময় আমরা 3 জন লোককে অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হই এবং ইন্টারাকশনের ভিত্তিতে তাদের কাছ থেকে চুরি যে সামগ্রী 2টি রিস্ট ওয়াচ, একটি আইফোন, একটি আইপ্যাড এবং তামার তৈরি জিনিসগুলি আমরা উদ্ধার করি এবং তাদেরকে আমরা রিমান্ড চেয়ে আসে কোর্টে প্রদান করি। কত টাকার অনুমানিক মাল হবে? মাল প্রায় 3 লক্ষ টাকাতে হবেই। মালিকের নাম এবং চোরদের নাম কি? অভিষেক চন্দ্র IS, উনি টাউনশিপে থাকেন। আকাশ রবি দাস, বাড়ি শ্যামলী বাজার, দীপঙ্কর বণিক পেছমুনি এবং সুদীপ চক্রবর্তী, বাড়ি বণিক পেছমুনি। তোকে আদালতে প্রেরণ করবে এবং কতদিনের? আজকেই কোর্টে প্রেরণ করবো, 5 দিনের রিমান্ড চাই। NCC police presented them to the court asking 5 days of police remand. Police are further investigating over this incident. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. A one-day conference meeting of CPIM was held on Sunday at the State Party office. On this day, the meeting was organized by All India CPIM General Secretary M.A. Baby. On this day, at the meeting, the discussion was regarding the current situation of India and Pakistan war, and also they have discussed on how to strengthen the party in the state, said the State Secretary of CPIM Jitendra Chaudhary. আমাদের যে 24তম পার্টি কংগ্রেস হয়ে গেল, তারপর আমাদের পার্টি রাজ্য কমিটির প্রথম সভা। এই সভাতে উপস্থিত থাকবেন আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কমরেড M.A. বেবি, তিনি ইতিমধ্যে চলে এসেছেন। আজকে মূলত পার্টি কংগ্রেস এবং রাজ্য সম্মেলনের মধ্যে আমরা যে রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করলাম তার উপর চর্চা হবে এবং সেই চর্চার উপর ভিত্তি করে পার্টি কংগ্রেসের যে রাজনৈতিক যে দিশা ঠিক করা হয়েছে তা আমাদের রাজ্যে কীভাবে আমরা কার্যকরী করব, সাংগঠনিক দিক থেকে আমরা কি উদ্যোগ নেব, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। CPIM All India General Secretary M.A. Baby, CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary, Agur Deborma, former State Chief Minister and others were also present at the meeting. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. A person named Muslim Mia assaulted the Imam of a masjid on Sunday morning. He was severely injured.
Incident took place at Bajendra Nagar under Madhupur police station. Later, the villager caught Muslim Mia and handed over to the police. According to the incident report, on Sunday morning, Muslim Mia suddenly entered the masjid and brutally assaulted the imam of the masjid. As such, the imam got severely injured on his ear and other parts of the body. The incident was reported to Madhupur police station after the incident. Later, the villagers caught Muslim Mia and handed over to the police. However, the arrested Muslim Mia said over the incident that he lost his family and home because of the imam. He said the imam had promised to provide many things to Muslim Mia for over past 5 years. আমার সংসার জীবন সংসার শেষ করে লেছে হ্যাঁ আমার একটা জিনিস দোনো কথা কই আদা সব বছর ধরে ঘুরাইয়া আমার জীবন সংসার শেষ করে লেছে ওই দেখছি নি কেটে দিছে আর দোনো বাহির হইছে আমি ফাড়ি না হয়তো আমি মূর্খ দেখিয়া হ্যাঁ কালাদা জানি কিন্তু হের রূপে আমি কিন্তু হের রূপে আমি লইতে আমার তো আর বিলে আবার না দেখে হের কাছে একটা জিনিস চাইছি দিব কই দিতেছ না 10 বছর আমার জীবন সংসার ধ্বংস করে স্যার কি করছ আর কথা ভাই কই পরে তাই এমনি কি করে তাই না কালা জাদু তো আপনি কি চাইছেন আমরা টাকা দিছেন শান্তির কাছে আমার ওই যে ভালোর জন্য আমার সংসারটা ভালোর জন্য আমার ফ্যামিলির জন্য আমার আত্মরক্ষার জন্য আমি একটা জিনিস চাইছিলাম দিছেন না না The injured imam was taken to hospital for medical treatment. However, imam did not say anything regarding the incident. The villagers are now questioning on why did the imam was assaulted all of a sudden inside the masjid. Reporter Vejivan from Vishalgarh, Chini Khorang. A mega blood donation camp was organized by Majlispur Karjakari Manch on Saturday. Minister Susanta Chaudhary and others were present. The present guest inaugurated the event by lighting a candle. Later, Tourism Minister Susanta Chaudhary addressed his speech at the program. 10 মজলিশপুর মণ্ডলের যে কর্মচারীদের যুক্ত মঞ্চ এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে এবং প্রত্যেকটা ইউনিট ব্লাড প্রতিটা ড্রপ অফ ব্লাড মানুষের কাজে মানুষকে জীবনদানে এবং মানুষকে বাঁচার জন্য এখানে সহযোগিতা করবে যদিও রাজনৈতিকভাবে আমাদের কর্মকাণ্ড অনেকটাই বন্ধ রাখা হয়েছে কিন্তু রক্তদানকে আমরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে ধরি না বা আলোচনাও করি না কারণ এটা মানব কল্যাণ আপনারা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন বাইরের তাপমাত্রাও যথেষ্ট বেশি আজকে তাই আমি খুব সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এখানে বিরাম দেব যারা মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে জিরানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান আছেন বিক্রম দেবনাথ আছেন জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান রতন দাস মহোদয় রানীর বাজার পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান প্রবীর দাস আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং এই মণ্ডলের সভাপতি রণজিৎ রায় চৌধুরী এখানে উপস্থিত আমাদের কর্মচারী নেতৃত্বগণ আছেন ফুকনদা আছেন দালাল সাহেব আমাদের সুভাষিস চৌধুরী সাহেব আছেন আমাদের বাপি গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী বন্ধুরা বিভিন্ন দপ্তর থেকে যারা এসেছেন স্বেচ্ছায় রক্তদান দিচ্ছেন এবং আমার সামনে এই এলাকার আমার গুরুজনেরা যুবক ভাইয়েরা প্রত্যেককে আমি নমস্কার জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই মহতি কাজে উপস্থিত থেকে কর্মচারী মঞ্চকে এখানে সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিকভাবে অনুপ্রেরণা যোগানোর জন্য রক্তদান মানে জীবনদান এটা আমরা সবাই জানি এবং আমাদের সরকার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দল 10 জন যদি রক্তদান করে আমরা সেখানে উপস্থিত হই কারণ এটা একটা এমন জিনিস যে যার কোনো বিকল্প নেই যে আমি অর্থ দিয়ে রক্তদানের থেকে বিরত থাকবো এটা হবে না আমি অন্য কিছু দিয়ে রক্তের বিকল্প হিসাবে আমি তৈরি করব এটা সম্ভব নয়
সায়েন্টিস্ট যারা রয়েছে, বিজ্ঞানী যারা রয়েছে, অনেক চেষ্টা করেছে, এখনো করছে যে রক্তদানের বিকল্প হিসেবে কোনো কিছু বের করা যায় কিনা। ডাইরেক্ট যে আমাদের ট্রান্সফিউশন, আমাদের যে ডাইরেক্ট রক্তটা একটা শরীর থেকে আরেকটা শরীরে যাচ্ছে, বা একটা শরীর থেকে রক্ত নিয়ে আমি আরেকজনকে দিচ্ছি, এর বাইরে ওষুধের মাধ্যমে, ইনজেকশনের মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে তার বিকল্প তৈরি করা যায় কিনা। কিন্তু এখন পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো বিজ্ঞানী সফলতা লাভ করতে পারেনি। এটা আমার থেকে আপনার, আপনার থেকে আমার, এভাবে নিয়েই মানুষের যে চাহিদা, মানুষের যে প্রয়োজনীয়তা, সেটাকে আমাদের তুলে ধরতে হবে এবং মানুষের পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमाने शालना रगे शोरा कुमार ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगनो माराता हमते हमजा माया फायो बाबा गोरिया जतनि नकुंगो माइफार को फंकलांगे हाने साया तलांगे थांगो আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangha. Bo Akshay Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection de na night thau te offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bising phadi jing jotto on night thau te chin sa ha paro habin nai len. Akshay Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangrak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi trenang ni Akshay Tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hangai na rong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making thursday should give manai mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur Rock, 7 Melisicang, Hambai. Khulumkha ang Rumi Murashing, hastini joto khaganang lukurang no, buisho tai goria ternodogoi, khakaham tai khapurmaya faru. Norong ni bagay tubui phaiga Sharna Akshay offer, o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora. Sharna Kamal Jewelers haste ni joto lokurang ni bagay kaisa koptoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabang ma rangsang ni manik tubui phaiga. Offer ro tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond ro tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro 3ta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagay joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025
আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র, 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100%